अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम मॉरल स्टोरीज पढ़ रहे हैं। मॉरल स्टोरी फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड मॉरल स्टोरी फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। एक ही वीडियो में दो स्टोरीज होती हैं। याद रखें, मेरे इसके अलावा भी और चैनल्स हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी ये स्टोरी है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अदर पॉसिबल मॉरल्स हैं प्राइड हैथ अ फॉल, डू नॉट बी प्राउड, अपीयरेंसेस ऑलवेज आर ऑफन डिसेप्टिव, धोखा देना, जाहिर हमेशा धोखा देता है। सीइंग इज नॉट बीइंग, नथिंग इज यूजलेस, या गॉड हैज मेड नथिंग यूजलेस। नेक्स्ट जो है ना आ सकता है गॉड हैज मेड नथिंग यूजलेस, ये भी मॉरल आ सकता है। द ओरिजिनल स्टोरी है द फुलिश स्टैग, बारासिंगा, अहमक बारासिंगा। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक दफा एक बारासिंगा नदी से पानी पी रहा था। ही ड्रैंक वाटर टू हिज फिल, उसने पेट भरकर पानी पिया। सडनली ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर, अचानक ही उसने साफ पानी में अपना अक्स देखा। He was extremely delighted to see his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत हॉर्न देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। सींग देखकर बहुत ज्यादा। He felt very proud and admired the grace of his horns. उसने बहुत फख्र महसूस किया और अपने सींगों की बहुत ज्यादा तारीफ की। As it is wisely said, pride goes before destruction and and arrogant spirit goes before a fall. Suddenly he caught the sight of his thin and lean legs. अचानक ही उसकी नजर अपने कमजोर और पतली टांगों पर पड़ी। He was ashamed of his thin and weak legs. उसे अपने कमजोर और पतली टांगों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। He felt disgusted for his thin legs. उसे उनसे नफरत महसूस हुई। He heaved a miserable sigh and said. उसने आह भरी काबिल रहम आह भरी और कहा, इट इज अनफॉर्चुनेट टू हैव सच ब्यूटीफुल हॉर्न्स विद सो अगली एंड थिन लेग्स। ये मेरे लिए बहुत ही बदकिस्मती है कि इतने खूबसूरत सींगों के साथ ये कमजोर सी पतली टांगें जो है, बदसूरत टांगों का होना। While he was feeling disgusted for his weak legs, वह भी अपनी कमजोर टांगों के लिए नफरत महसूस कर रहा था। He heard the howls of hounds. उसने कुत्तों की गुराहट सुनी। Then he saw a pack of hounds running towards him. फिर उसने कुत्तों को अपनी तरफ, शिकारी कुत्ते, हाउंड्स होता है पतली कमर वाले जो शिकारी कुत्ते हैं, वो शिकारी कुत्तों को अपनी तरफ भागते हुए देखा। Seeing the hounds, he started to run towards the forest. कुत्तों को अपनी तरफ भागते हुए देखकर वो जंगल की तरफ भाग पड़ा। Soon his thin legs carried him away from the hounds. जल्द ही उसकी पतली टांगें उसे उठाकर कुत्तों से दूर ले गई। As someone has rightly said, God has made nothing useless. किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह ताला ने कभी भी कोई चीज बेकार नहीं बनाई है। While passing through the forest, his beautiful and strong horns got entangled फंसना in the bushes. जंगल में से गुजरते हुए उसके खूबसूरत और मजबूत सींग झाड़ियों में फंस गए। He struggled very hard to get himself free, but all in vain. उसने अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। As it is rightly said, क्या किसी ने क्या खूब कहा है, appearances are often deceptive.
जाहिर हमेशा धोखा देता है। Soon he was overtaken by the hungry hounds. जल्द ही भूखे कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। They fell upon him, वो उस पर टूट पड़े, and tore him into pieces, और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। His legs and thin legs, ugly and thin legs helped him to run very fast to save his life. उसकी कमजोर और पतली टांगों ने बदसूरत और पतली टांगों ने उसकी अपनी जिंदगी बचाने के लिए तेज भागने में मदद की। बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स ब्रॉट अबाउट हिज डेथ, लेकिन उसके खूबसूरत सींग उसके लिए मौत ले आए। एज इट इज वाइजली सेड, किसी ने क्या खूब कहा है, प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा होता है। Story for brilliant students. As someone has rightly said, all that glitters is not a gold. It is a very famous saying. ये एक बहुत मशहूर कहावत है। It means that appearances are often deceptive. जाहिर हमेशा धोखा देता है। We should not be misled by the attractive appearances of things and people, because what appears good and beneficial may prove ugly and destructive for us. As it is rightly said, appearances are often deceptive. The following story illustrates the truth of the above quotations. Once a stag arrived at a stream to quench its thirst. Quench होता है प्यास खत्म करना। He drank water to his fill. Suddenly he caught the sight of his reflection in the clear water. He was extremely delighted to see his beautiful horns. He felt very proud and admired the grace of his horns. As it is wisely said, pride goes before destruction, and arrogant spirit goes before a fall. Suddenly he caught the sight of his thin and lean legs. He was ashamed of his thin and weak legs. He felt disgusted for his legs. He was dissatisfied and discontented with his slender, कमजोर, slender होता है कमजोर, slim legs and slender and slim legs. He heaved a miserable sigh and said, "It is unfortunate to have such beautiful horns with so ugly thin legs." While he was feeling disgusted for his weak legs, he heard the howls of hounds from a distance. Then he saw a pack of hounds running towards him across the field. Seeing the hounds, he started to run towards the forest. Soon, with the help of his thin legs, he was well away from the hounds. As someone has rightly said, God has made nothing useless. ये भी moral आ सकता है. God has made nothing useless. All of a sudden, he had to cross thick bushes grown here and there. While passing through them, his beautiful and strong horns got entangled in the bushes. He struggled very hard to get himself free, but all in vain. As it is wisely said, all that glitters is not a gold. Soon he was overtaken by the hungry hounds. They fell upon him and tore him into pieces. His thin and ugly legs, his ugly and thin legs
helped him to run very fast to save his life, but his beautiful horns, of which he was so proud, brought about his death. As it is wisely said, pride hath a fall. Have a nice day. Allah Hafiz. AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।